Welcome back, guys. As we previously explained everything regarding hydraulic system, what are the basic laws regarding the hydraulic system and how does it work. Now we will take an example over here of the basic braking system of smaller aircrafts. Basically this is known as passive hydraulic system. इसके अंदर क्योंकि पंप नहीं लगा होता है, this is a direct system, तो इसीलिए it will be easier for you guys to understand how does it work. So अगर आप if you look into this image little closely, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, there is a piston over here, there is this piston which is over here. This piston is known as the master cylinder, and over here this cylinder it is known as slave cylinder. Basically what happens, यहाँ पे अगर आप देखेंगे there is lesser area under the लोड, तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो इसने प्रेशर एक्सर्ट किया. पैस्कल्स लॉ क्या बोलता है? पैस्कल्स लॉ बोलता है द प्रेशर विल बी फेल्ट इक्वली ऑन एंड्स, वेदर इट इज ओवर हेयर, वेदर इट इज ओवर हेयर, वेदर इट इज हेयर. That is where hydrostatic pressure comes in the act. No matter what the shape is, if the liquid is in a specific amount, the pressure will be felt on all of the ends within the confined space. So it is a confined space over here. अब इसने यहाँ पे एक amount का pressure exert किया, वो प्रेशर जब आगे बढ़ा इट कैन बी फेल्ट ओवर हेयर टू. बट यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस. अगर आप क्लियरली देख पाएंगे, इस पिस्टन का एरिया इज स्मॉलर और इस पिस्टन का एरिया इज ग्रेटर. तो ब्रह्मास सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ, दैट इज देयर इज अ ग्रेटर एरिया अंडर द लोड ओवर हेयर. Sorry, there is a greater area under the pressure over here, so the load will be doubled. So इससे क्या हुआ? इससे अगर मेरा 50% ही मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, it will still give me the 100% work. 50% force, let's say it increases, let's say it is still doing the work greater than the force I applied, क्योंकि force will be greater, the load available over here will be greater for that. So this is the basic mechanism. How does an hydraulic system work? If you want us to make little more depth videos regarding any systems in an aircraft, you can comment down. We will surely come up with another videos.